मजा आ गया, मतलब इट्स जस्ट लाइक made my senses work more, like, clearly. And I was watching it, and I was like so fucking hyped from the very beginning. And मैंने उसका पोस्ट like एक शॉर्ट भी डाला है कि कैसे थे वो यूजिंग अ सॉन्ग ऑफ दांजिंग विच इज वन ऑफ माय फेवरेट्स इन द क्रेडिट, राइट? वहीं से मेरा हो गया था. एंड देन दे स्टार्टेड शोइंग द लाइक वर्कआउट सीन एंड ऑल द hallucinations and stuff that Punisher is going through. And I've been watching it, I was like, this is Punisher by Batman, Joker, and everything is like on the other side, and Punisher is on the other side. He's so fucking dark and brutal, and he's a like common man. डेयर डेविल के पास में चलो सेंसेस तो है, उसके पास में ओपी नहीं, ही हैज लिटरली नथिंग बट ही जस्ट अ नॉर्मल ट्रेंड सोल्जर. एंड उसके लिए इतनी सारी चीजें जो वो करता है, इतनी फीट को अचीव करना, इट्स रियली लाइक नॉट थिंकेबल एट ऑल. बट फिर भी वो करता है, तो ही नोज विच काइंड ऑफ वर्ड दिस इज, एंड यहाँ कैसे लोगों से डील करना चाहिए. एंड आई एम टोटली विथ हिम भाई कि this world is so fucked. There is this scene where he just goes to this cafe or something, and hot dog लेता है, वो खाते खाते बाहर जा रहा है, and background में there is chaos, there is vandalism, there is anarchy, and people are just fucking have lost their mind, and they are no better than like brainless animal at that time. And it's okay to terminate that kind of object. एक हाथी जब पागल हो जाता है तो we have no other choice just to but to terminate it, and that's how we should do with these uncontrolled bitches. And I'm totally with the Punisher in this. I loved it यार, I just can't, मतलब मैं चिल्ला रहा था while watching the whole episode, and you can actually guess it from my voice की सही से नहीं आ रही है. And I'm so fucking was, अगर मैं सोच रहा था कि if this is entertainment, if you are making these things for entertainment purpose, then this was entertaining as fuck for me. Only 40 minutes. I had no time to waste over there. न्यू कैरेक्टर्स है, इमोशनली कनेक्ट करवा दिया, पूरा इतनी जल्दी बेस सेट कर दिया, एंड नाउ दे आर फकिंग इन अ बैटल, एंड आई जस्ट लव्ड इट. And simultaneously I've been watching it, and I was like, they gonna kill his character in Spider-Man No Way Home. The kind of feeling I've been getting after watching the trailer was like, they are totally gonna ruin that character. This is the Punisher, this is originality, and that's why we love different characters, because they have different morals, traits, and the very reaction for towards some specific things, right? जैसे वो रिएक्ट करते हैं, दैट्स व्हाट मेक्स देम डिफरेंस. पनिशर एक सिचुएशन को लेके पैनिक, हेलेसिनेट, एंड एकदम वैसा डायलेमा में चले जाता है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम पनिशर. एंड आफ्टर दैट व्हेन ही कम्स बैक, ही जस्ट फक्स इट अप, राइट? फक्स द पीपल अप, राइट? बट दे गोना प्रोबेबली numb him in No Way Home, which I'm really scared of. प्लीज यार, एक सैचुरेशन होना चाहिए. They gonna kill the character, yeah. It's really felt bad, right? I don't know what to say, but जहाँ तक बात है one last kill की, you shouldn't miss it. You have no right to miss it. I know it's not that kind of stuff जो कि हिस्ट्री बदल दे, या फिर जो कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स ही है या कुछ है, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ सुपर हीरो फैन, एंड फ्रॉम अ पर्सन who has watched Marvel from the very beginning, और ये सब entertaining चीज़ें entertainment के लिए ही हम देखते हैं, तो this was a fucking like enormous. There was a lot of entertainment, and
they have shown us, they were able to show us the actual character of Punisher under 40 minutes, and they shown like attached us with him emotionally, and they showed us probably जितना पूरे डेयर डेविल में एक्शन सीन था उससे ज़्यादा एक्शन इन जस्ट लाइक 40 minutes. So this is it, you have to watch it. This is really compact and I can rewatch it though. John Bernthal, my bro.